Hello viewers, in this video tutorial we are going to learn and discuss about how to switch on your computer, what is operating system, Windows operating system, and what is booting process, how to switch off your computer. In this video tutorial we will learn how to operate a computer. So let's start. Let's learn how to switch on the computer. To switch on the computer, press the power button of CPU. Viewers, हम कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए CPU के अंदर पावर बटन को प्रेस करेंगे. What is operating system? Viewers, to operate any computer, we will require an operating system. Operating system is a system software that makes our computer ready to use. Without this, computer is nothing. It directly interacts and controls hardware and applications of a computer. Operating system works as an interface between computer hardware and user. Viewers, हम जब भी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. हर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है. इस तरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं. हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं और अपना काम परफॉर्म करते हैं. Viewers, there are different types of operating systems available in the market. The most popular and common operating system is Microsoft Windows. Microsoft actually named it after the rectangular window size, which were and is still used to display contents on the screen. Windows 11 is the latest version of Microsoft Windows operating system. It's a graphical user interface, it's user-friendly platform, and it's also multitasking operating system. Viewers, जब भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. And Windows 11 is the latest version of Microsoft Windows. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड कॉमन है. हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर. व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मीन्स हम एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. व्यूअर्स, ये एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है. हम बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल करना सीख भी लेते हैं और इसको इस्तेमाल भी करते हैं. बूटिंग प्रोसेस. व्यूअर्स, when we switch on the computer, it starts booting. In computer, booting is the process of starting a computer. The process includes getting both the hardware and software ready and running. Make computer system ready to use. Viewers, जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, पावर का बटन प्रेस करते हैं, तो उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं. उस बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को रेडी करता है ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें. इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं. Viewers, after booting, the following screen known as the login screen will appear. This screen prevents unauthorized persons to use your computer. It will ask for a username and password. Enter your username and password and then click on arrow button or you can press enter. Viewers, after booting, login screen आपसे username और password required करता है. हम इसे अपना username और password बताएंगे, उसके बाद enter प्रेस करेंगे. Viewers, after successful login, first screen that appears is called desktop screen or simply desktop. Desktop is the main screen area you see after you turn on your computer and log on to Windows. Viewers, जब हम login credentials देते हैं अपना username and password एंटर करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन हमें नज़र आती है हम उसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं. How to switch off your computer? Viewers, click on the Windows button at the bottom left hand corner of your screen. Then select the power button and then select shutdown. Through these steps, you can easily shut down your computer. Well, viewers, that's all about this video. I will see you in next. Thank you.